to all of you. What's up? Hi Shravan, hi Wali, good morning. चलो guys, how are you everyone? क्या हाल चाल? All prepared, all set. Aman, good morning. Nihal, Anita, good morning. Anita, वनकम. सर आज की रिवीजन भी होगी. हाँ, आज सबकी रिवीजन होगी मनन. I'll just give you all the details. Give me 5 minutes. Thank you Shravan. As excited. You are always excited like me. Nivedita, good morning बेटा. आज फुल रिवीजन करेंगे. माधव, गुड मॉर्निंग. तेजस्वी, गुड मॉर्निंग. वीनू, गुड मॉर्निंग. प्रत्याक्ष, गुड मॉर्निंग. शिवानी, गुड मॉर्निंग. गायत्री शर्मा, गुड मॉर्निंग. लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग. प्राज्वल, गुड मॉर्निंग. कौशिक, गुड मॉर्निंग. Lovely guys, I'm so happy to see you. महिमा, as fine as rocking as you can see me always, है ना. जस्ट मैं ये थोड़ा स्लाइड बंद कर देता हूँ ताकि तुम लोग मुझे बराबर से देख सको. हाय मनोज, हाउ आर यू? चलो, मैंने अपनी चाय भी खत्म कर ली है. निहाल, योर एएस रिवीजन वाज एक्सीलेंट. थैंक यू निहाल. आज तो और भी मजा करेंगे हम लोग. गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन. पीटी, थैंक मी आफ्टर यू गेट एन एग्जाम्शन. ठीक है. तरुण, गुड मॉर्निंग. शिवम, प्रणाम बेटा. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग यू. प्रिया, गुड मॉर्निंग. वेटिंग फॉर द सेक्शन. हर्ष, परफेक्ट. हर्षा, गुड मॉर्निंग. अजय, अरे वाह, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अजय. आई यूज्ड टू मिस यू इन रिविजन क्लास ऑल्सो. अभी क्या कर लेंगे? तू मुझसे वो स्वीट ले ही लेगा ना. ठीक है, चलिए गाइस. निहाल, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट. अजय, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ बेटा. अभी आज मेरे बारे में ज़्यादा कम सोचेंगे और अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे. गाइस, पूरा सेशन अटेंड करेंगे, बीच में प्लीज़ लीव आउट नहीं करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. गाइस, प्लानिंग टुडेज सेशन. Guys, don't think that I'm going to only revise the concept. We are going to take up some questions also, lot of questions also guys. Guys, order में हम लोग ये सारे काम करेंगे. So the order is going to be, guys, सबसे पहले मैं चैप्टर से चालू करूँगा PPI. The second chapter that I'll go to is departmental. ठीक है. PPI departmental के बाद the third chapter that I will be taking is guys investment accounting. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बाद फोर्थ चैप्टर विल बी इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक. गाइस, फिर AS करते हैं. सो AS2 करेंगे, फिर AS10 करेंगे, फिर AS16 करेंगे. अब एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. दिस इज द सीक्वेंस गाइस. उसके बाद हम लोग 8th में क्या कर लेंगे गाइस, एक बड़ा सा टॉपिक करते हैं सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री के बाद करते हैं गाइस गायत्री, ऑल फर्स्ट क्लास बेटा, ऑल फर्स्ट क्लास. सिंगल एंट्री के बाद हम लोग रिडम्पशन ले लेते हैं. सो विल टेक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट वन आई विल टेक इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और डिबेंचर के बाद आई विल टेक कैश फ्लो. कैश फ्लो के बाद आई विल टेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद आई विल बी टेकिंग इन्वेस्टमेंट आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया, सिंगल एंट्री, बोरोइंग कॉस्ट आ गया, डिपार्टमेंटल आ गया, ब्रांच आ गया. नहीं, ब्रांच नहीं आया. सो विल टेक ब्रांच. ब्रांच के बाद मैं लूँगा HP, दैट इज़ हायर परचेज. हायर परचेज के बाद आई विल डू AS11. AS11 के बाद आई विल टेक AS एंड इंड AS का इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा टॉपिक है वो. एंड 17th आई विल टेक बोनस एंड राइट इशू. And finally I will end up with AS12. and जाते जाते मैं तुम लोग को AS1 करा के जाऊंगा. ठीक है, ये शेड्यूल है. मैं इसका फोटो ले लेता हूँ और ये शेड्यूल के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज पेज में लिखते जाएंगे.
What is AS13? इन्वेस्टमेंट आ गया ना पागल लोग, ये क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट AS13। सुबह सुबह में उठे नहीं हो। चलो, can I start if you all are ready? Good morning. अच्छा guys, the material that I am referring to is the compiler. So आप कंपाइलर से रेफर करते रहेंगे जो भी क्वेश्चन है। अगर किसी ने कंपाइलर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैं उसका लिंक दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो गाइस दिस इज द लिंक टू द कंपाइलर। लक्ष्मण पहले ये शेड्यूल फॉलो करेंगे, उसके बाद अगर आपको कोई ओल्ड का स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए होगा तो वो बाद में लूंगा, बट पहले ये एक टॉपिक है, दिस विल बी डन विद द न्यू कोर्स पीपल। ठीक है, you all should be referring to the compiler. Do you all have the compiler downloaded guys now? Too good, wonderful. चलो, can I start guys then today's session? प्लानिंग हो गई, अभी सेशन को चालू करना है और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कल पेपर है एंड लेट्स रॉक। चलो, नाउ गाइस एवरीबडी से फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, let us remember any god that we want, you know, remember your religion, remember your parents, and remember that you are the best. ठीक है, so guys first you have to take God's name, then we have to take parents name, and then we have to say we are the best. Clear? Too good. And last में guys, now let's start with my word, that is jackass. चलिए guys, topic number 1, chapter number 1 for the day. Chapter 1, that is profit prior to incorporation. Profit prior to incorporation. People who are watching on YouTube, this will be streamed live for 1 hour, but after 1 hour I'll continue the session only on Unacademy app. Are we exactly clear with that one? So people who are watching YouTube session, please after an hour switch to Unacademy app. चलिए, now I don't want anyone talking or chatting unless and until you have questions. और अगर questions होंगे तो आप question block में डालेंगे, ठीक है? उसके बिना आप कोई बातें नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे अभी से। चलिए, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में गाइस, फर्स्ट थिंग्स टू लर्न, द बेसिक थिंग्स टू लर्न गाइस, व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डू? वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट। कल एग्जाम में जाके जब भी लिखोगे, सो टाइटल में गाइस सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना, कंपनी के नाम के बाद इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड, ईयर एंडेड नहीं लिखना, फॉर द पीरियड एंडेड लिखना। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन गाइस? देन फर्स्ट थिंग आप कैलकुलेट करोगे टाइम रेशियो, सेकेंड रेशियो आप कैलकुलेट करोगे सेल्स रेशियो, एंड थर्ड गाइस ऑल द वर्किंग नोट्स विल फ्लो। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? ऑल द वर्किंग नोट्स, स्पेसिफिक वर्किंग नोट्स जो होते हैं प्री और पोस्ट करने के लिए, वो फ्लो होना चाहिए। टाइम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए गाइस हम लोग को DOT, DOI और ईयर एंडिंग की जरूरत पड़ती है। सेल्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और वर्किंग नोट्स, कोई भी स्पेसिफिक चीज की वर्किंग नोट्स हो वो पहले सॉल्व हो जाएगी। Are you exactly clear with that one? गाइस जहां पे भी ये टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो और वर्किंग नोट्स कैलकुलेट कर रहे हो, वो पेज पे अकाउंट बनाना चालू नहीं करना। डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑन दैट पेज। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? अकाउंट्स नेक्स्ट पेज पे बनना चाहिए। अभी एग्जैक्टली क्लियर? अकाउंट्स नेक्स्ट पेज पे बनना चाहिए, और अकाउंट्स का फॉर्मेट होना चाहिए गाइस आपका सबसे पहले टोटल, टोटल के बाद बेसिस, बेसिस के बाद प्री, और प्री के बाद पोस्ट। अभी एग्जैक्टली क्लियर? दिस शुड बी योर फॉर्मेट। सो दिस शुड बी डिटेल्स, इनकम स्टेटमेंट, बेसिस, प्री, पोस्ट। कोई भी कैलकुलेशन या एनी वर्किंग गाइस हैज टू बी शोन, ऑल द वर्किंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आंसर। अभी एग्जैक्टली क्लियर? यस नंबर, दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड। सो गाइस डिटेल्स, टोटल, बेसिस, प्री, पोस्ट। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? ओके, नाउ व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डू? Guys, we are required to determine the income and expenses in
pre-period and in post-period. What is pre-period? Is period before the incorporation. What is post-period? Is period after the incorporation. Okay. Guys, now expenses have to be divided in pre and expenses have to be divided in post. Now you tell me time ratio or sales ratio. Okay. Now everyone should start. First one, guys. Advertisement कौन से ratio में? Sales ratio. Next one, rent कौन से ratio में? Time ratio. Guys, showroom rent कौन से ratio में? शोरूम रेंट भी टाइम रेशियो में डालना, मिस्टेक करके शोरूम रेंट को काइंड ऑफ सेल्स रेशियो में मत डाल देना. नेक्स्ट वन गाइस, सैलरी कौन से रेशियो में? सैलरी हैज टू बी इन द टाइम रेशियो. एब्सोल्युटली क्लियर. ओके गाइस, सम स्पेसिफिक वर्किंग नोट्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कंसिडरेशन. उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें, और तीन डेट चाहिए होंगे. फर्स्ट वन DOT, सेकेंड वन DOI एंड थर्ड वन डेट ऑफ पेमेंट. DOT से DOI प्री फेज में जाएगा, DOI से डेट ऑफ पेमेंट पोस्ट फेज में जाएगा. क्लियर. सम कंट्रोवर्शियल थिंग्स जो लोग मिस्टेक करके आते हैं एग्जामिनेशन में, आपको नहीं करनी है. फर्स्ट वन गाइस, कंपनी ऑडिट फी कहाँ जाएगा? कंपनी ऑडिट फी विल गो इनटू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. परफेक्ट. गाइस, टैक्स ऑडिट कहाँ जाएगा? टैक्स ऑडिट विल गो इन द सेल्स रेशियो. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गाइस. नहीं मानसी, हाँ टर्नओवर लिखा है तूने, चलो ठीक है. गाइस, उसके बाद बैड डेट्स कौन से रेशियो में? बैड डेट्स सेल्स रेशियो में. परफेक्ट. गाइस, बैड डेट्स के बाद आता है बैड डेट्स रिकवर्ड. कहाँ पे? बैड डेट्स रिकवर्ड विल ऑलवेज गो इनटू प्री. एब्सोल्युटली, यू गाइस हैव वर्कड आउट वेरी वेल. गाइस, नेक्स्ट वन, डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ पे? Debenture interest in the post incorporation period. Perfect. Managing director's remuneration post incorporation. Absolutely fantastic. Okay. उसके बाद आता है partner salary pre incorporation. Very good. Very good. Too good. ठीक है. Lovely. और टाइम रेशियो हो गया, सेल्स रेशियो हो गया. गाइस, जीपी कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे? जीपी सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे. फैंटास्टिक. टू गुड गाइस, आई लव यू ऑल. चलिए गाइस, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इसके लिए हम लोग. सो गाइस, लेट अस पिक अप अ क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 12 है. मानसी इज आस्किंग मी, क्या ये वीडियो बाद में देखने मिल सकता है? हाँ मानसी, देखने मिल सकता है, बट वो ऐप में ढूंढ के बहुत टाइम लग जाएगा. ओके गायत्री, पेज नंबर 108. आई एम जस्ट रॉकिंग ऑन गायत्री. ठीक है. चलिए गाइज, एक छोटा सा क्वेश्चन खाली डिस्कस करेंगे. फिलहाल मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सो यू ऑल आर ऑब्जर्विंग दिस क्वेश्चन और साथ में सॉल्व होना है. फर्स्ट वन, द promoters of Shiva took over on the behalf of a running company with effect from 1st April. Guys, what is 1st April? DOT. The company got incorporated on 1st of August 2017. So 1st August 2017 क्या है guys? DOI. The annual reports were made on 31st of March 2018. What is 31st March 2018 guys? Year ending, which revealed that sales for the whole year totaled to 2,400 lakhs, out of which sales till July 2017 was 600 lakhs. Guys, जुलाई तक सेल्स 600 lakhs था, और 1st of August को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ. सो कैन आई से जुलाई तक जो सेल्स है वो प्री इनकॉर्पोरेशन में चले जाएंगे. सो टोटल सेल्स 2,400 है, उसमें से 600 विल गो टू प्री एंड बैलेंस विल गो टू पोस्ट. डू यू अग्री विद दैट वन? सो गाइज, अपना सेल्स रेशियो बन गया, टाइम रेशियो बन गया. नेक्स्ट वन, I'll just solve it in फटाफट से, आपको नहीं देखना है. The expenses are as follows. Guys, salaries कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो. नेक्स्ट वन, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो. सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, टाइम रेशियो. ट्रैवलर्स कमीशन, सेल्स रेशियो. डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रेशियो. बैड डेट्स, sales ratio. Director's fee,
post, tax audit, sales ratio, depreciation on tangible assets, time ratio, debenture interest, post. Absolutely beautiful, guys. Wonderful. चलिए. So guys, the way that you are going to solve the question in the examination, जैसे मैंने कहा वैसे ही आप solve करेंगे. So I'm adding a slide. Guys, ये May 2018 का paper solve कर रहा हूँ मैं. So question, this is May 2018 का paper solve कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलिए. Guys, first one. सर अगर टैक्स ऑडिट में कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? टैक्स ऑडिट मानसी ऑलवेज इन सेल्स रेशियो, कंपनी ऑडिट ऑलवेज इन टाइम रेशियो, एंड दे विल स्पेसिफाई इन द एग्जामिनेशन कि ये टैक्स ऑडिट है या कंपनी ऑडिट है, ठीक है मानसी? गाइस फर्स्ट वन, ऑलवेज द वर्किंग नोट, सो वी विल हैव अ टाइम रेशियो फर्स्ट. टाइम रेशियो पे पहले DOT चाहिए, सेकेंड वन DOI चाहिए, सेकेंड वन ईयर ऑडिट चाहिए. अभी एग्जैक्टली क्लियर? यस अमन, कंपनी ऑडिट पोस्ट. गाइस व्हाट इज द डेट ऑफ टेक ओवर? 1 April 17. DOI year 1st August 17, and guys year ending 31st of March 2018. So guys, pre and post, how many months in pre? पार्टनर सैलरी कौन से रेशियो में होगा? पार्टनर सैलरी ऑलवेज एंड ऑलवेज प्री में जाएगा. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? 4:8. सो गाइज दैट विल बी 1:2. ठीक है? एनी डाउट्स क्वेश्चन ब्लॉक में रखो प्लीज. नेक्स्ट वन, सेकेंड, सेल्स रेशियो. गाइस टोटल 2400 का सेल्स था, उसमें से प्री का सेल्स उन्होंने 600 दे दिया, तो पोस्ट का फेज 1800 हो जाएगा. सो कैन आई से सेल्स रेशियो विल बी 1:3. सो टाइम रेशियो इज 1:2 एंड सेल्स रेशियो इज 1:3. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड. अजय, मैंने कंपाइलर का लिंक देखो ऊपर ही रखा है बेटा. कौशिक सर, ओनली ऑडिट लिखा हो तो क्या करेंगे? अगर ओनली ऑडिट लिखा हो कौशिक, भूल से भी एग्जामिनेशन में नहीं लिखेंगे, पर अगर लिखा हो तो अजम्पशन डाल देना दैट वी आर अज्यूमिंग इट्स अ कंपनी ऑडिट और उसे पोस्ट में डाल देना, ठीक है? चलो, सो वी आर डन विद टाइम रेशियो एंड वी आर डन विद सेल्स रेशियो. गाइस अब जो पेज पे टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकाला है ना, उस पेज पे अकाउंट्स नहीं बनाओगे एग्जामिनेशन में. नेक्स्ट पेज पे जाओगे और अकाउंट्स बनाओगे. और यहाँ पे प्लीज लिखना नहीं भूलना, इनकम स्टेटमेंट फॉर, अभी एग्जैक्टली क्लियर विद द नेम ऑफ द कंपनी, फॉर पीरियड एंडेड लिखना, बिकॉज पीपीआई में गाइस जरूरी नहीं कि वो पूरा साल हो. अगर पूरा साल हो तो आप ईयर एंडेड लिख सकते हो. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सर अराउंड कितने आवर्स का ये सेशन होगा? मैं शाम को 6 बजे तक आपके साथ हूँ. सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में जाएगा ना? गाइस आंसर करो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएंगे? Traveling expenses will go to the sales ratio, not in time ratio. We are assuming that traveling is done more for sales. So guys, one, two, advertising always in sales ratio में, 3 and 4. सर कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर क्या है? निहाल, कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 2 है निहाल. चलो गाइस, यहाँ पे आएंगे डिटेल्स, डिटेल्स के बाद आएगा यहाँ पे टोटल, टोटल के बाद यहाँ पे आप लिखोगे बेसिस, बेसिस के बाद प्री एंड पोस्ट. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? With both the traveling expenses and the commission will go on sales ratio. Yes, Shagun, I'll take your doubts once I complete 2 questions on the chapter. ठीक है? सब क्वेश्चन ब्लॉक में डाल के रखो अपने क्वेश्चंस. मानसी, ट्रैवलिंग कमीशन सेल्स रेशियो में जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी सेल्स रेशियो में जाएगा. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? यस भरत, ये फॉर्मेट नेसेसरी है. चलो गाइस, सबसे पहले आप लोग कहाँ से चालू करोगे? गाइस ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने कहा था 20% था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो गाइस ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ 2400 का 20% कितना होता है गाइस? 480. और कौन से रेशियो में डालोगे उसे आप? सेल्स रेशियो. अभी अलोकेट मत करो आप. अभी एग्जैक्टली क्लियर? डोंट अलोकेट दिस गाइस. लेस द एक्सपेंसेस. नाउ व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट वी हैव? द फर्स्ट एक्सपेंस इज सैलरी.
75, rent 30, sundry office expenses 72, travelers commission is 20, discount allowed is 16. Next one is bad debts. And I hope you are solving this question along with me. It's fun. Don't look at the TV screen. You are solving this question along with me. Director's fee is 30. Next one. After director's fee, we have tax audit. Tax audit is 16. Next one is depreciation. Depreciation is 15. Next one is debenture interest. Debenture interest is 14. And guys, you will have the profit here. Are we exactly clear with that one? So this will be my profit. Classic, guys. Too good. Chalo. Now, guys, salaries, time ratio, rent, time ratio, office expenses, time ratio, traveling commission, sales ratio, discount, sales ratio, bad debts, sales ratio, director's fee, post, tax audit has to be in sales ratio, depreciation has to be in time ratio, and debenture interest has to go into the post. What is the time ratio and sales ratio? Time ratio is 1:2, sales ratio is 1:3. So sales ratio 1:3, time ratio 1:2. Chalo guys, if you can give me the amounts, please. First one, 480 in the ratio of 1:3. So 480 divided by 4 in the ratio 1:3, it's 120, 360, 25 and 50. 30 in the time ratio is 10 and 20. 72 in time ratio, so 72 divided by 3, it's going to be 24 and 48. 20 in sales ratio has to be 5 and 15. 6, 4 and 12. Am I correct with this? Sales ratio 2 and 6. 30 in the post incorporation. Next one, sales ratio 1:3 is the sales ratio, so it has going to be 4 and 12. 15 in the time ratio, 15 in 1:2, so 5 and 10. 14 will go into the post incorporation phases. Are we clear with that one? Now, guys, first calculate the total of the profit so that you can always match up your answer. 480 minus 75 minus 30 minus 72 minus 20 minus 16 minus 8 minus 30 minus 16 minus 15 minus 14. Guys, I'm getting a profit of 184. Anyone getting a profit of 184, guys? Yes, too good. Next one, guys, pre-incorporation. 120 minus 25 minus 10 minus 24 minus 5 minus 4 minus 2 minus 4 minus 5. Guys, I'm getting an answer of 41 or 49. What is it? 41. Too good. Guys, where will this 41 go to? Pre-incorporation profit goes to? Pre-incorporation profit goes to capital reserve, and post-incorporation, pre-incorporation loss goes to goodwill. Classic. Next one, 360 minus 50 minus 20 minus 48 minus 15 minus 12 minus 6 minus 30 minus 12 minus 10 minus 14. Guys, I'm getting an answer of 143. Confirm whether this is correct. And 143 goes to, guys, net profit. That's my PNL. Are we exactly clear with that one? Guys, total check karo, 41 plus 143. Is it 184? And tell me, checkers. Are we exactly clear with that one? Too good. Wonderful. One more question, and then if you have any doubts on this chapter, I'll take it up. Otherwise, we'll just keep on moving ahead. Are we exactly clear with this? Guys, question number 4. अमन, PDF का लिंक मैंने पेज पे डाल के रखा है. Are we exactly clear with that one? Mary, bad debts recovered will always be in the pre-incorporation period. Vignesh, you have to just following up. Link is not opening. My website is right here in front of me.
Okay, guys, I'm solving question number 4, that is November 18 paper. Can I start if you all are ready now? Yes, too good. First one, Sun Limited took over the running business of partnership firm M and AN Brothers with effect from 1st April. Guys, what is 1st of April? DOT. The company was incorporated on 1st of September 2017. What is 1st of September 2017? DOI. The gross profit and loss account for the year ended 31st March 18. So 31st March 18 is year ending. So we have got the time ratio now. First one, guys, salaries in which ratio? Time ratio. Rent, time ratio. Carriage outward, sales ratio. Audit fees, I'll have to check which audit it is. Traveling expenses, sales ratio. Commission, sales ratio. Printing and stationery, time ratio. Electricity, time ratio. Depreciation, time ratio. Advertising, sales ratio. Preliminary expenses, post. Managing director's remuneration, post. And we'll have to check the answer that it comes to 145. GP will always be in sales ratio. Next one. Trend of sales during April to March was as under. April, May 85,000, June, July 1,05,000, August, September 1,20,000, October, November 1,40,000. Sir, this PDF is not available in the link provided. Gagandeep, I can open it, beta. Free material. Go to IPCC final compiler. IPCC final compiler. Okay. Adarsh, IPCC final compiler, page number 113, question number 4. Next one. Guys, this will be helpful for the sales ratio. Next one. Sun Limited took over the machine worth rupees 7,20,000 from ANN Brothers and purchased the new machine on 1st of Feb 2018 for 4,80,000. The company decides to provide the depreciation at the rate of 10%. Guys, depreciation pay adjustment hai. So we'll go up and have a tick mark on depreciation. This is the way you need to read the question in the examination and move on. Don't stop in the middle and start thinking कि ये डेप्री कैसे करेंगे, क्या करेंगे. डेप्री पढ़ा, ऊपर जाओ, डेप्री को टिक करो, आगे बढ़ो. Are we exactly clear with that one? Next. The company occupied additional space on 1st of October. Additional space, it goes to rent. So have a tick mark on rent, have a tick mark on traveling expenses. Audit fees pertains to the company. So guys, tick mark on rent, tick mark on traveling expenses. And company audit it is. So if I'm not wrong, can I say company audit will go to post? Aniket, company audit will go to post, beta, not time ratio. Too good. Next one. Salaries are doubled from the date of incorporation. Salaries are doubled from the date of incorporation. So guys, I'll go back and will have a tick mark on salaries as well. So we need to have working note number 1, 2, 3, 4 working notes. Are we exactly clear with that one? I'm working with a pen here. So I have a tick mark on salary, tick mark on rent, tick mark on traveling expenses, and tick mark on depreciation. Classic. Can I start working on the question, guys? Are you all ready? Too good. Chalo. So let's go and solve the question again now. As I told you, this is the way to solve the question. So guys, this is going to be my question number 2, November 18 paper. So question November 2018 paper. Working note number 1 has to be time ratio, DOT, DOI, and year ending. Guys, DOT, date of takeover, 1st of April 17, 1st of September 17, and guys, 31st of March 2018. Guys, tell me, how many months in pre-incorporation and how many months in post-incorporation? Chalo, I want answers from you. 5 months in pre-incorporation, 7 months in a post-incorporation. So my time ratio is 5:7. Are we all clear with that one? Second one, sales ratio. April, May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. And guys, after 5 months, 1, 2, 3, 4, 5, we'll have a click. First one, April and May, 85,000 per month. 85, 85,
June, July 105. So June, July 105. August, September 120, 120. October, November 140, 140. December onwards 150, 150, 150, 150. Abhinav, there is full audio. You need to just reload your app. Guys, total 85 plus 85 plus 105 plus 105 plus 120. I am getting a total of 500. Tell me, am I correct with 500? Is 2. 120, 140, 140, 150, 150, 150, 150. Am I getting 1000, guys? So, guys, is the ratio 1 is to 2? Time ratio 5 is to 7. Sales ratio 1 is to 2. Guys, third one is salaries. Working note for salary. And what did it tell you regarding salary? The salaries have doubled from the date of incorporation. So before the incorporation, it was 5, that is 1, 1, 1, 1, 1. After incorporation, it has doubled. So 2, that is number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 twos are 14. 5 is to 14. Am I correct with my salary ka ratio 5 is to 14, guys? Lovely. Fantastic, guys. Next one. Guys, the next working note is for rent. And how much is the rent that they have given to me? Rent they have given to me is 96,000. Guys, the question tells me on 1st October, I occupied new premises at 6,000 per month. So, guys, from 1st October, if I'm not wrong, 6,000 per month. Guys, can I say this is purely post? How many months? October, November, December, Jan, Feb, March. 6 months. 6,000 into 6. Can I say 36,000 will go into post? Yes or no, guys? Acha, that means, guys, 96 minus 36. Can I say 60,000 will go into pre? No. No. मैं तुम लोग को मारूंगा आज, हाँ ठीक है, टाइम रेशियो में डिवाइड होगा. आई विल ऑलवेज ट्राई टू कंफ्यूज यू टुडे बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक यू प्रिपेयर फॉर टुमारो. 60,000 guys in the ratio of 5 is to 7. Chalo, 60,000 in 5 is to 7. 60,000 divided by 12 into 5. If I'm not wrong, it comes to 25 and is to 7, it comes to 35. Do you agree with that one, guys? So this is pre and this is post. So guys, total 25,000 goes to pre and guys, 35,000 plus 36,000, 71,000 goes to post. Lovely. This is rent done. Rent के बाद working note number 4 is traveling expenses. So guys, traveling expenses. How much was traveling expenses? Guys, 66,000. Guys, tell me, generally traveling expenses कौन से ratio में divide होगा? Sales ratio में divide होगा. Fabulous. And guys, now the 66,000 will be divided in the sales ratio. How much are the traveling expenses? But they said 30,000 was incurred by the office staff, while remaining were incurred by salesmen. Guys, out of this 66, 30,000 was divided by office staff and remaining were by the salesmen. So guys, tell me, जो office staff का traveling expenses है वो कौन से ratio में? Time ratio में. So ये time ratio में जाएगा और ये कौन से ratio में जाएगा guys? Sales ratio में जाएगा. Are you understanding, everyone? Now 30,000 in time ratio. Guys, 30,000 in 5 is to 17, please. 30,000 divided by 12 into 5. If I'm not wrong, this is pre and this is post. So pre will come to 12,500 and 17,500. And guys, 36,000 in sales ratio. What was the sales ratio? 1 is to 2. So guys, it's going to be 12,000 and 24,000. So guys, my total will be 24,500. And next one is 24,000 plus 17,500 is 41,500. Am I correct, guys? Traveling expenses done. Okay, guys, working note number 5 is for depreciation. Guys, depreciation they have given to me in the question is 80,000. Now 80,000. Guys, they said Sun Limited took over a machine of 7,20,000 from A&M Brothers and purchased a new machine on Feb 1, 2008. The company decides to write off a depreciation at the rate of 10% per annum. Guys, 7,20,000 का जो depreciation है वो 10% है, वो 12 months के लिए लगेगा if I'm not wrong. That comes to 72,000 and 72,000 can I say will be divided in time ratio. 72,000 divided by 12 into 5. Time ratio. Is it 30,000?
and minus 72,000. Guys, is it 42,000? Am I correct, guys? And guys, then they have acquired 1st of Feb को 4,80,000 का machinery. So 1st of Feb 4,80 into 10% and 1st of Feb. Is it only 2 months, guys? 4,80 into 10% into 2 divided by 12. I'm getting 8,000 rupees of depreciation. And if I'm not wrong, guys, can I say this 8,000 will only go into post? So this is pre and this is post. Are you all catching this up properly? Now, this is the way you are going to solve the question in the examination. Working note, working note, working note, working note, done. And now what are we going to do? We are just going to go and present the answer, guys. Done? Too good. Lovely. Chaliye. So guys, next page pe answer. First one. Always, as I told you one more time, income statement for period ended. This is the way to present the answer. Are we exactly clear with that one, guys? Next, 5 columns. Column 1, column 2, column 3, column 4. And I will prepare this format on the next page also because I require it there also. So this is going to be post. This is going to be pre. This is going to be basis. And after basis, I'm going to prepare one more column, and that is for total. Guys, first only the totals, nothing else. Are we exactly clear with that one? So first I will start with GP. GP is 7,50,000 and less the expenses now. The first expense is going to be salary, 133, rent, 96. After rent, I have got carriage outward. Carriage outward is 75,000. Ali, check the pin. I have already pinned the where you can get the notes, Ali. Next one, audit fees. Audit fees are 12,000. Next one, traveling expenses. Traveling expenses are 66,000. Next one is commission. Guys, commission is 48,000. Next one, printing. Printing and stationery is 24,000. Guys, next one, electricity. Electricity, guys, is going to be 30,000. Next page पे जा रहा हूँ. Depre. So depreciation is going to be 80,000. Next one, advertisement. Advertisement is going to be 24,000. After that, preliminary expenses. Preliminary expenses are going to be 9,000. Next one, MD's remuneration. MD's remuneration is going to be 8,000. And guys, we need to check whether we are getting a profit of 145. We need to check that. Okay. पहले इतना काम complete करोगे because this is a double check system that I'm trying to tell you. 7,50,000 minus 1,33,000 minus 96,000 minus 75,000 minus 12,000 minus 66,000 minus 48,000 minus 24,000 minus 30,000 minus 80,000 minus 24,000 minus 9,000 minus 8,000. I'm getting an answer of 145. Tell me, are you all getting an answer of 145? Classic. Now go for the basis. Guys, sales ratio. Sales ratio was 1:2. Salaries, guys, working note. Salaries in which ratio we had? 5:7 time ratio. Rent, guys, we had specific information on rent also. So guys, 25 and 71 working note. 20 rent 30 25 71 25 71. Carriage outward will be in the sales ratio. Audit fees, which audit it was, guys? Guys, do you remember which audit? Company audit, post. It is 12,000. Traveling expenses, we had a working note 66. So traveling expenses, guys, 30 is going to pre and 50 is going to post. No, traveling expenses.
24th 500, 41 500. Traveling expenses, working note, 24 500 and 41 500 and 41 500. अजय, सेल्स रेशियो 5:14 कैसे निकाला? अच्छा 5:14, सॉरी अजय, यू आर राइट. My mistake, Ajay. Rent is 71 plus 25. Perfect, na? Rent is 96,000. I'm correct on rent, guys. Guys, am I correct on rent? Commission will be sales ratio. Printing will be time ratio. Electricity will be time ratio. Depreciation is a working note. And what is a working note of depre? That 80,000, 30 and 50. 30 will go to pre and 50 will go to post. Advertising will go to sales ratio. Preliminary expenses will go to the post incorporation, that is 9,000, and MD's remuneration will also go to post incorporation, and that is 8,000. Are you catching this up very well, guys? Next one, chalo, 7 lakh 50 in 1:2. So it's going to be 250 and 5 lakh. Guys, use your calci well in examination. 1 lakh 33. 133 in 5:14. 5:14 is 19. Guys, I'm getting 35 and 14. I'm getting 98. Am I correct, guys? Classic. Sales ratio 25 and 50. Next one, sales ratio 48 divided by 3. 48,000 divided by 3. Am I getting 16 and 32? Next one, 24 in time ratio. Time ratio was, guys, what was the time ratio? Time ratio was 5:7. Time ratio is 5:7. So 12, 10 and 14. Next one, 30,000 also in the time ratio. So 30,000 divided by 12 into 5. 12,500 and 17,500. Am I correct, guys? Next, 24,000 in sales ratio of 1:2. So 24,000 divided by 3 in the ratio of 1:2. Is it 8 and 16? Classic. Okay. Going back, now let's calculate the pre-calculation. So 2 lakh 50 minus 35,000 minus 25,000 minus 25,000 minus 24,500 minus 16,000 minus 10,000 minus 12,500 minus 30,000 minus 8,000. Guys, I'm getting an answer of 64,000. And where will 64,000 go to? 64,000 will go to capital reserve. Clear? Next one, we'll go to the post now. 5 lakh minus 98,000 minus 71,000 minus 50 minus 12 minus 41,500 minus 32 minus 14 minus 17,500 minus 50,000 minus 16,000 minus 9,000 minus 8,000. I'm getting 81,000, guys. Are we clear? 81. 81 will go to PNL. And guys, check it up. 81 plus 64, answer comes to 145. Tell me, Jakas. This is your profit prior to incorporation. Are we exactly clear with that one? I want everyone telling me, Jakas. Too good. People who are watching this session live on YouTube right now, guys, at 9 o'clock, it will stop. I cannot have live feed continuously. So guys, I would request you all to please come to Unacademy app. Clear? Okay, I'll take up all the questions. First one, what is the sequence and the plan of revision? Sharansh, sequence and the plan of revision is here. First page. This is how the revision will go. Sharansh, I hope I'm answering your question well. Skip. Mary, donation to political party will be pre or post? Donations, if given by the company, Mary, will go to post. But if it is given by the partnership firm, it will go to pre. The question will be very specific about it. 99% of time, donations are given to the political party by the company. So please post it to post. Okay, Mary? Next one. Advertisements in which ratio if nothing is given? Agrawal ji, advertisement always sales ratio mein hote hai. ठीक है? Next one.
सर व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी? रितिका, मैंने शेड्यूल फर्स्ट पेज पे लिखा है, उस हिसाब से ये पूरा रिविजन चलेगा. एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता हूँ मैं आपको. नेक्स्ट वन, डिविडेंड ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. प्रिया, डिविडेंड पेड विल गो टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एंड डिविडेंड अगर रिसीव्ड होगा तो वो लोग आपको बताएंगे कि कौन से पीरियड का है, स्पेसिफिकली बताएंगे प्रिया. ठीक है. मैरी, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन. Pratyansh, carriage outward in sales ratio. Yes, Pratyansh, carriage outward in sales ratio. Do I have to present the working note in a statement or in any manner? प्रियंका, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही आप वर्किंग नोट्स दिखाओगे. अभी एग्जैक्टली क्लियर प्रियंका? नेक्स्ट. सर 9 बजे के बाद फिर कब आओगे? 9 बजे के बाद मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ. 9 बजे के बाद यूट्यूब पे सेशन बंद हो जाएगा, यहाँ पे सेशन कंटिन्यू होगा. चलो, आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. कोमल इज आस्किंग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लॉस गोज टू. करण, ऑडिट फीस मैंने 10 बार पूछ दिया है. टैक्स ऑडिट विल गो टू. गाइस 10 बार आंसर करने के बाद एक ही क्वेश्चन पूछते हो आप वापस फिर से मुझे. टैक्स ऑडिट कहाँ जाएगा? सेल्स रेशियो. कंपनी ऑडिट कहाँ जाएगा? टाइम रेशियो. गाइस बैड डेट्स कहाँ जाएगा? सेल्स रेशियो. गाइस बैड डेट्स रिकवर्ड कहाँ जाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में नहीं, बैड डेट्स रिकवर्ड जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन में. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड. चलो, कंपनी ऑडिट टाइम रेशियो में नहीं, कंपनी ऑडिट जाएगा पोस्ट में. बिकॉज हम लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हो, मेरे को बोर होता है फिर पूछना आंसर देना. कंपनी ऑडिट विल गो टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, एवरीवन क्लियर नाउ? अभी झकास बोलो इस चैप्टर को. थैंक यू बोलो इस चैप्टर को. और अभी एक विश करो कि कल ये चैप्टर एग्जामिनेशन में आ जाए, धमाल हो जाएगा, अपने को फुल मार्क्स लेके आएंगे हम लोग. ठीक है, चलिए. सो गाइज, आई एम डन विद सम टॉपिक इन द वर्ल्ड विच इज नोन एज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. चलो guys, what is the second topic that I have told you now? Guys, second topic हम लोग करेंगे डिपार्टमेंटल. ठीक है, चलिए let's start. Chapter number 2 and chapter number 2 will be for departmental. Clear? ठीक है guys, डिपार्टमेंटल में क्या करना है? अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? डिपार्टमेंटल. गाइस डिपार्टमेंटल पे क्या करना है? नहीं तरुण, ब्रेक 10 बजे आएगा. 2-3 मिनट का ब्रेक नहीं हो सकता हर एक चैप्टर के बाद ऐसे कोई भी. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? मैंने आपको नहीं पूछा है कि मैं क्या कराने वाला हूं. आज आप सेशन आप सिर्फ मुझे लर्न करेंगे. मार्कअप, मार्कडाउन, ये सब बाद में होगा. यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम मी टुडे. आई एम नॉट आस्किंग यू आपको क्या करना है. मैंने सिर्फ चैप्टर पूछा क्या है. मतलब तुम एग्जामिनर को बोलोगे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन डाले, कल तुमको मजा करना एकदम ही. पेपर दे दूं मैं आज? चलो, नाउ गाइस लिसन टू मी अगेन. हाँ, मेरे पास सब कुछ है श्रवण, सब कुछ. आई हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. Chalo, now listen to me. Nobody talks again. Okay. Departmental. What are we going to do in this chapter in departmental is, Mary, that's okay. Don't be sorry or something, beta. We are going to enjoy the day. Guys, in this topic, again, guys, profit and loss account has to be bifurcated between 2 or more departments. So in profit prior to incorporation, we divided the profit and loss account into pre-period and the post-period. But guys, for profit and loss account, here it has to be divided in departmental format. Are we exactly clear with that one? And guys, again, the bases remain same. Some expenses have to be divided in some ratios. Are we exactly clear? So guys, tell me first of all, departmental के लिए and जिसके पास भी compiler है, it has going to be go on page number 183. ठीक है? Okay, guys, first one, salaries in which ratio?
सैलरीज इन टाइम रेशियो से निकल जाओ, सैलरीज टाइम रेशियो में नहीं, अभी कोई टाइम रेशियो नहीं है. प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन खत्म हो चुका है. यू आर इन अ चैप्टर नोन एज डिपार्टमेंटल नाउ. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, salaries will go in number of employees. Are we exactly clear with that one? Next one, bad debts in which ratio? Sales ratio. Perfect. Discount allowed in which ratio? Sales ratio. Discount received in which ratio? Purchase ratio. Advertisement in which ratio? Sales ratio. Rent rate and taxes which ratio? Area. Rent rate and taxes in the area. Next one, depreciation on furniture which ratio? Depreciation on furniture. Assets, on the basis of assets. Next one, electricity expenses which ratio? Electricity expenses, units, light points. If the light points are not given to you, then area. Wonderful. Labor welfare expenses which ratio? Labor welfare expenses, number of employees. Classic. Too good. Are we exactly clear with that one? Lovely. Chalo. Guys, this is page number 185. So I will take up a question, guys, first of all, which has come in May 18 paper. So once again, I'll go into the question. And I will say question May 18 paper. This is the way that you revise your things on the last day. Are we exactly clear with that one? Too good. Chaliye. May 18 paper. Here is the question, guys. Shravan, if your screen is stuck, okay, just do the refreshing part, okay? Okay. Sir, discount received in purchase ratio? Yes. Guys, any questions? अभी से question block में डालते जाओ. जब ये chapter complete होगा तो मैं आपके सारे questions लूँगा. Are we exactly clear with that one? Any questions, put on the question block. Okay. Can I start with this now? Messrs. Delta is a departmental store having 3 departments, that is X, Y, and Z. The information about the 3 departments is as follows. Opening stock, purchase, data, sales, closing stock, value of furniture of each department, floor space occupied, number of employees, electricity consumed. So guys, they have given you asset, floor space, number of employees, electricity consumed. Are we exactly clear with that one? Next. Guys, now tell me which ratios. Okay, carriage inward. कैरेज इनवर्ड परचेज रेशियो. कैरेज इनवर्ड को सेल्स रेशियो में कब से डालने लगे भाई हम लोग? परचेज रेशियो. कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो. सैलरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स रेशियो. डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रेशियो. Discount received, purchase ratio. Rent, area, depre, asset, electricity expenses, light points, labor welfare, number of employees. Prepare the departmental trading and profit and loss account for 31st March after providing for bad debts at the rate of 5%. Guys, don't forget to provide the bad debts. What happens in examination, guys, you know, most of the times we try to run and at times we try to forget what is written below the table. Guys, please read the full question carefully. You're going to read the full question carefully. Are we exactly clear with that one, guys? Too good. Wonderful. Chaliye. No doubts of any other chapter, please. We are just concentrating on departmental right now. Let's start. I'll solve this question, guys, and I want you all to solve this question along with me. Chalo. Guys, question. May 18. So first of all, guys, what are we going to do here is divide them in 3 columns. So this is going to be my center line. And guys, you are going to write the statement, everything, profit and loss account for the year ended this and that and all.
Rakshit, this topic I guess is not there in IPCC Group 1, it is there in IPCC Group 2. I will complete this topic within half an hour. So if you want to take a break for half an hour and be back, please do that. By 9:30, you can again join up. So what was the first chapter? Lakshya, we completed profit prior to incorporation. We are already done with PPI. Let's start. First one. A, B, C. A, B, C. Guys, this is my trading account. And on the next page, I'll prepare my profit and loss account. Are we exactly clear with that one? Acha, it is XYZ? Okay, sorry. Guys, it is not ABC, it is XYZ. People are feeling bad. मैंने ABC लिख दिया. चलो प्रियंका. XYZ. XZ. Neela, no, we'll not have a separate session for IPCC. How can I have it? The whole day I'm giving here only. Tarun, it can be combined, but draw a line in between because you need to calculate GP. Okay, Tarun? You cannot directly calculate NP. Tarun, are you getting that? Vachan, which chapter are we doing? We are doing departmental Vachan right now. Chaliye. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Classic. So that was my trading and this is my PNL. And I'm writing it again. One is X, Y, Z and X and Y and Z. Guys, tell me. Can I start? Yes. Too good. Guys, the first information that I have, first one is opening stock. So this is my trading and this is my PNL. To opening 18, 12, 10. 18, 12, 10. Next one, purchase 66, 44, 22. To purchase 66. Saksham, I have given the schedule at the first page. Have you taken the pic of the schedule, Saksham? If you want, I'll take this pic once again, Saksham. I cannot give you exact time when I'm going to start the branch. Branch is a 13 topic, so it will be after 2 o'clock in the afternoon. Chalo. Next one. Guys, opening stock purchase. Data's at the end, we don't want sales, 90. So buy sales, we have 90,000. We have got 67,500. And we have got 45,000. Next one, closing stock. So by closing, we have got 22,500. We have got 8,750. And we have got 10,500. Perfect, too good. Next one. Your boss, don't tell me thank you right now. Tell me thank you after the examination when you score an exemption. I want exemption, nothing less than that. Guys, carriage inward. Which ratio will you divide carriage inward at?